Hello friends, today we will learn shares and dividends. So whenever any company gets listed, there are on many parameters, there are number of shares decided, and then when company makes profit, it distributes the profit to the people who have the shares of those companies or that company, and that becomes dividend. Let us get acquainted with some basic terminologies in this topic. First point or first terminology is nominal value. Nominal value is also denoted as NV. It is also called as face value. You can even call it in abbreviation form as face value, FV, or you can call this as printed value. Very rarely we use this word. Nominal value chalega ya face value. Next point is next terminology that we need to know is market value. Usually denoted by MV, or it is also called as cash value. So what happens once the stock gets listed on the stock market? Suppose a price of the share in the beginning, when the company was initially offering shares, suppose the price was 10 rupees. After that, the market value can either increase or decrease. So 10 can become 15, or 10 can even become 8, or any other number. So when the price of the share increases, we call it as the stock is trading at premium, or we can call it as above par. But if the stock which was costing say rupees 10 is now costing, market value is rupees 8, तो ये तो कम हो गया, तो इसको हम बोल सकते हैं discount. So the stock is now available at a discounted price, or we can call it as below par. So at par अगर आया, it means that whatever is the nominal value is equal to the market value. We will continue with some more points. One more terminology will be dividend, which is also the part of the topic. Dividend means the profit that you get, profit we get from company. So suppose company has made certain amount as its profit, then it will distribute the profit to all its shareholders. This dividend happens only once a year. So company will not give every month some money. Yearly, whatever profit it makes, on that basis it will decide to give dividend. If there is no profit, then no dividend. So it is not a compulsory thing. But अपने problem में अगर dividend दी है, then we should be knowing what it is. Let us take one example, one quotation. ये common language बोल सकते हैं. Suppose ऐसा कोई language आया, 15% of rupees 100 shares at rupees 145. So कभी कभी ये लैंग्वेज समझ में नहीं आता है क्या लिखा है. रुपीज़ फॉर 15% ऑफ 100 रुपीज़ 100 शेयर्स एट रुपीज़ 145. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग निकालेंगे. नंबर वन वैल्यू, नंबर वन नॉमिनल वैल्यू, NV nominal value is rupees 100 of one share. Second interpretation is market value, MV, market value is rupees 145 of one share. So आप बोलोगे सर वो लिखा नहीं है ऊपर, लेकिन तो
ये लैंग्वेज है तो ऐसा इंटरप्रिटेशन हमें करना है. थर्ड इंटरप्रिटेशन दैट वी कैन डू इज डिविडेंड, या प्रॉफिट लिख लेते हैं, चलो डिविडेंड लिख लेते हैं. डिविडेंड, और ठीक है पहले डिविडेंड ही लिख लेते हैं. डिविडेंड दैट यू आर गेटिंग इज 15%. 15%. Now dividend is always offered over the nominal value, always. So dividend will be 15% of 100 is equal to rupees 15 per share. तो यहाँ कोई स्टूडेंट अगर 145 से मल्टीप्लाई कर देता है वो तो मार्केट वैल्यू है. तो डिविडेंड इज ऑलवेज ऑफर्ड ओवर द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर. इन दिस केस इट वॉज 100. डिविडेंड को प्रॉफिट भी बोल सकते हैं. प्रॉफिट फॉर द इंडिविजुअल हु इज होल्डिंग द शेयर. एक और पॉइंट कर सकते हैं, दैट कैन बी रेट ऑफ रिटर्न. इसको रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि आपने जो शेयर रखे हैं, आपने आपके 145 रुपीज़ इन्वेस्ट करके रखे, क्योंकि आपने तो मार्केट वैल्यू पे लिया है शेयर. तो आपने जो 145 रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो आपको क्या रिटर्न्स मिल रहा है, आपको क्या फ़ायदा हुआ ये 145 रुपीज़ इन्वेस्ट करके. तो फ़ायदा ये हुआ कि आपको साल में 15 रुपये मिल रहे एक शेयर पे, और एक शेयर का मार्केट वैल्यू है 145. तो ये हो गया आपका 15/145. मार्केट वैल्यू मतलब जो प्राइस पे आपने बाई किया था, इनटू 100. तो इसको एवेल्यूएट कर लेते हैं, देखते हैं रेट ऑफ रिटर्न कितना आता है. सो वी कैन कैंसिल इट, एंड ये 3 हो गया और ये हो गया 29. सो योर रेट ऑफ रिटर्न इज बिकमिंग 300/29. परसेंट नहीं बोलना, इसको ऐसे भी लिख सकते थे. क्या हो जाएगा, 10 में जाएगा 290, रिमाइंडर भी 10 होगा अपॉन 29%. दिस इज़ योर रेट ऑफ रिटर्न. इन फ्यूचर वी मे कॉल इट एज ROR ऑल्सो. तो तभी समझ जाना, रेट ऑफ शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न. एग्जाम में इट इज़ एडवाइजेबल आप पूरा लिखिए रेट ऑफ रिटर्न. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. ऐसे ही एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 7th पॉइंट ले लेते हैं. से वी आस्क यू, लैंग्वेज दी है 12% ऑफ ₹25 एट डिस्काउंट ऑफ ₹5. कुछ ऐसा दिया है सपोज. तो इसका मीनिंग क्या क्या निकलेगा, चलो थोड़े पॉइंट्स तो हम लोग लिख सकते हैं. नंबर 1, लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन. नंबर 1, नॉमिनल वैल्यू क्या होगा, करेक्ट, लाइक द ओल्डर वन 25. सेकेंड क्वेश्चन, मार्केट वैल्यू क्या होगा. देखो आपको क्या मिल रहा है, इज़ अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5. परसेंटेज कुछ नहीं दिया, डिस्काउंट ऑफ ₹5 बोला, मतलब जो भी उसकी नॉमिनल वैल्यू है उसमें 5 रुपया कम हो जाएगा. So this will become ₹20. If it was written here premium, we would have done +5. Third point, dividend. Let's calculate dividend. Dividend है 12%. हमेशा डिविडेंड किस पे मिलेगा हमें, नॉमिनल वैल्यू पे. नॉमिनल वैल्यू 25 है. So 4 1 12/4 इज ₹3. तो ये हो गया ₹3. ये हो गया आपका डिविडेंड ₹3 पर शेयर. क्योंकि ये नॉमिनल वैल्यू भी 1 शेयर का है. एक और करते हैं, इसको डिविडेंड को और क्या बोल सकते थे, प्रॉफिट. पहले भी लिखाया था, आई एम री राइटिंग इट. एक और करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न कर लेते हैं. रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, दैट आपको कितना प्रॉफिट हुआ है 3 रुपीज़ का, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, आपने मार्केट वैल्यू पे शेयर लिया है, 20 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया.
नॉट 25, ये कहा, सॉरी, या तो ये आपने 20 में लिया है, नॉट 25, सो अपॉन 20 इंटू 100, तो ये देख लो कितना हो रहा है, 1 सा 5 सा 3 5 सा 15 रुपीज़ 15, सॉरी ये परसेंटेज है नॉट रुपीज़। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ 15% पर एनम, क्योंकि आपको डिविडेंड पर एनम मिलेगा, करेक्ट। लेट अस टेक नाउ, तो these are the points that we have written so far. Let us take now some formulas, right? Some formulas. Let's try to learn them with understanding rather than by hearting. Number 1, इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। Can we imagine and learn it by understanding? Yes. Suppose you have purchased 1000 shares and market value of one share is 15 rupees, then 1000 into 15 will give you your investment amount. Let's write one more. Let's write annual income. Annual income का दूसरा नाम हो सकता है dividend. How much dividend you will get is to be seen. तो एनुअल इनकम या आपका डिविडेंड कैसे डिसाइड होगा कि एक तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना है इनटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे रहा है कंपनी इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर। चलो समझने की कोशिश करते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई अवर रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू वी विल गेट अवर इनकम फ्रॉम वन शेयर। If you multiply with your number of shares, you will get your annual income. Annual income is also called dividend, but this dividend is on the total number of shares पे आपको जो मिला है, not on one share. एक और कर सकते हैं, rate of return. Rate of return will be depending on your income या annual income लिख लेते हैं. We could have even written dividend upon your investment. Investment by default is total investment into 100. This way you can get your rate of return. There are other ways also in which we can get our rate of return. जैसे कि किसी ने ऐसे लिख दिया कि dividend on one share upon total dividend into 100, तो भी आपको आइडिया आ जाएगा आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है. Fourth point, let us write number of shares is equal to your investment upon market value of one share. This is as good as we have written the first point only, or you can even write number of shares as equal to your annual income upon whatever is the income from one share upon
income from one share. There's no need to by heart it. If the data is given in this manner, then by no logic we can come to this conclusion. तो अगर नंबर ऑफ शेयर पूछे और ये टाइप का डेटा नहीं दिया है, एन एनुअल इनकम एंड इनकम फ्रॉम वन शेयर अवेलेबल है, तो हम लोग बस खाली थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ऐसा कुछ पड़ा था, ये सब बायट तो नहीं हो सकता. Let us see one more last point before we start with problems, and then we will try to recollect these formulas by observing the data in the question instead of by hearting them. एक और कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट फिर से लिख लेते हैं. थर्ड पॉइंट में देखो क्या लिखा है, रेट ऑफ रिटर्न लिखा है. लेट मी राइट ROR फॉर सम टाइम. रेट ऑफ रिटर्न को इज इक्वल टू एनुअल इनकम लिखा है न्यूमरेटर में. इफ यू आर सीइंग द थर्ड पॉइंट, then annual income is given by number of shares into rate of dividend into nominal value of one share upon investment. We have simply recopied the third point. बस खाली एनुअल इनकम के जगह पे हमने ये पॉइंट लिखा है न्यूमरेटर में, जो हमने ऊपर ही पढ़ के रखा था. सेकेंड पॉइंट में हमने वही पढ़ा था, वही लिखा है न्यूमरेटर में, सिर्फ रेट ऑफ डिविडेंड को ROD लिखा है. सो ROR विल बिकम दिस रेशियो इनटू 100, है कि नहीं. नाउ ये जो नंबर ऑफ शेयर्स अपॉन इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, नंबर ऑफ शेयर्स अपॉन इन्वेस्टमेंट, ये टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ देखी है. देखो ये मैंने क्या बोला था, हम लोग कुछ डिराइव करके दिखाना चाहते हैं आपको, इसके लिए ये कर रहे हैं. तो वी विल नाउ राइट देयरफॉर ROR इनटू इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स is equal to ROD into NV of one share. Therefore ROR into, now when you do investment upon number of shares, investment upon number of shares, what will you get? You will get the market value, right? You will get the market value of one share is equal to ROD into NV of one share. एक काम कर देते हैं, ये 100 को यहाँ से निकाल देते हैं. I'll tell you the reason. तो ROR परसेंटेज में आने वाला था, लेकिन ROD भी तो परसेंटेज में होगा, तो ROD का परसेंटेज लेफ्ट की तरफ आएगा 100, तो 100 कट हो गया, ऐसे सोच लो. फाइनली द इंटेंशन वॉज टू हेल्प यू इन मेकिंग यू लर्न एक अलग वे. ROR into MV, let me write in short form, it's understood to be MVF of one share is equal to ROD into NV of one share. So बस अगर ये हो सकता है तो यू ट्राई टू मेमोराइज दिस. आई नो मेमोराइजिंग इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया, बट दिस रियली हेल्प्स ऑफन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो ऐसे लर्न कर सकते हैं. ROR into MB, ROR into MB is equal to ROD into NV. The only error possible is that a child may write ROR into NV. वो एक आपको ध्यान रखना है. ऐसे सोच सकते हो M के बाद N आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो M पहले आएगा और यहाँ ROR से शुरू करना. राइट, लेट्स स्टार्ट विद सम प्रॉब्लम्स. लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स.